is a beautiful country as well as its diversity. So recently I took a 7-day trip the beautiful state Uttarakhand, also known as Devbhoomi. I was there with my younger brother Amit, and to take you all through the same experience, we filmed all of it. Good morning everyone, 6:30 in the morning, October 2021. Day for a journey. My Uttarakhand journey started with a beautiful morning in Ghaziabad. So there is all set to go and we are heading towards to Uttarakhand. Our destination, you can enjoy the drone shots. So guys, we are covered 180 kilometers from Ghaziabad to Haridwar. Haridwar is also known as the gateway of Char Dham, Gangotri, Himalayas, Kedarnath and Ghaziabad. So our next stoppage is Rishikesh. So guys, we are finally reached in Rishikesh. Rishikesh is also known as Yoga Capital of World. ऋषिकेश आए हैं और राफ्टिंग ना करें, ये पाप मुझसे हुआ नहीं और मैं निकल पड़ा राफ्टिंग करने। तो हमारे गाइड आ चुके हैं यहाँ पर। अगर जैकेट डूब जाए कोई फायदा नहीं, सब राफ्टिंग के बाद we are heading to our next destination. आप देख रहे हो सामने, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ वो कौन सा झूला है। आई थिंक वो दैट वन इज़ जानकी सेतु, एंड उसके बाद राम झूला, देन लक्ष्मण झूला। और उधर कहीं पे आप देख पा रहे हो, अगर फोकस कर पा रहे हो मेरा GoPro, तो उधर की तरफ जो है रेलवे स्टेशन है, और ये पूरा का पूरा आप ये जो पूरा आप देख रहे हो पूरा का पूरा ऋषिकेश है। So guys, we are raised in Tarchla, and you can see the views of Tarchla. Mountains are love. आप ड्रोन शॉट्स देखो, तब तक हम चाय पीते हैं। So guys, we are on the way of Tehri, and you can see these roads are amazing, and the view is
spectacular. Once we are reached in Tehri, then I can show you the Tehri Dam. Okay. सो अब हम आपको मिलते हैं टिहरी में। सो फाइनली वी रीच्ड इन टिहरी। बेसिकली टिहरी जो है भागीरथी रिवर और भिलांगना रिवर का कन्फ्लुएंस पॉइंट है, और जहाँ पर आज वर्ल्ड का 13 और इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट डैम है। कहते हैं ओल्ड टिहरी पूरी इस लेक में जलमग्न हो गई है, जिसमें 140 गांव आज भी लेक के अंदर है।